हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप मेरे नीट के दोस्तों? आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग की। क्या आपने खुद भी एनसीईआरटी ये सॉल्व करने की कोशिश की है? मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम भाई थोड़ा करके आइए। बस ऑलराइट, नहीं भी किया तो आई एम हियर। बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस सीरीज? वेल, हम लोग 11th ग्रेड के सारे चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी 11th स्टैंडर्ड खत्म किया है, दिस इज गुड फॉर यू। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, आपका बोर्ड एग्जाम करा है, देन यू फोकस ऑन दैट। और अगर आप एग्जाम ऑलरेडी नीट का पहले दे चुके हैं, इट्स बीन अ कपल ऑफ इयर्स, तो आप मे बी 11th की कुछ चीजें भूल गए होंगे, सो दिस गोना बी हेल्पफुल फॉर यू। एनीवे, अगर आप 12th के, अगर आपका बोर्ड अभी है तो ओके, बाद में देख लेना रिकॉर्ड लेक्चर, कोई टेंशन नहीं है। बट डू चेक द सेशन आउट। वी आर सॉल्विंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस में। दैट्स व्हाई दिस थिंग इज कॉल्ड NCERT exercises। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में यू हैव द लिंक ऑफ द होल प्लेलिस्ट। एंड वी आर एट केमिकल बॉन्डिंग टुडे। हम लोग ट्यूसडे को करेंगे थर्मोडायनामिक्स। सो शुरू किया जाए। मेरी आवाज साफ आ रही है? एबल टू हियर मी एंड सी मी? हे सुपर डुपर आदित्य, तीर्थराज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यू एबल टू हियर मी एंड सी मी राइट? वो कोई टेंशन नहीं है। पहला सवाल करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। राधिका, हाय हाय हाय, इट्स ग्रेट टू सी यू। यू आर वेरी रिगरस। Similar people there every single day. I've chosen to do the seventh question directly because पहले के जो चार पांच सवाल थे, they were asking basic theory of ये क्या होता है, वो क्या होता है. So from the NEET point of view and also conceptual understanding point of view, so I thought this was the first question that was interesting. क्या है ये? Discuss the shape of the following molecules using the Vesper theory, VSEPR model. BeCl2, BCl3, SiCl4, ASF5, H2S, PH3. एक ही करके आप नाम बताइए, या एक ही करके नाम बताइए. How about this? पहले तीन का बताइए एंड देन अगले तीन का, इन टू डिफरेंट कमेंट्स. पहले कमेंट में फर्स्ट थ्री का बताइए क्या होगा आपके हिसाब से. शेप. या बाय शेप आई मीन कि इंक्लूड द इलेक्ट्रॉन्स देयर. या समटाइम्स बिकॉज इफ यू डोंट इंक्लूड द इलेक्ट्रॉन्स, दैट गिव्स यू द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री. इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो है के साथ आप मुझे प्लीज बताइए. गुड इवनिंग सुल्ताना तनु. आई कैन, या तो आई एम गेसिंग यू गाइस कैन हियर मी एंड सी मी क्लियरली. तो शुरू करते हैं सेशन को. बताइए जरा सा. BCl2 मुझे डायरेक्ट लगता है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही बॉन्ड है. क्या हो सकता है? एट बेस्ट देल बी, यू हैव इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और यू हैव बॉन्ड पेयर, राइट? You have to add them both together. You need to do that, okay, to get this shape. But in this case, lone pair और bond pair है कि नहीं? Yeah, तो first thing we'll have to do is write down कि कितने bond pair हैं, कितने lone pair हैं. And from first glance, looks like इसमें इसमें और इसमें तो lone pair नहीं है, और इसमें तो है, इसमें भी है, आर्सेनिक में नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है अभी ऊपर ऊपर से देखने से, मुझे ऐसा लग रहा है लोन पेयर उसमें नहीं है. बॉन्ड पेयर तो सब में है ऑब्वियसली, लोन पेयर इनमें नहीं है. ओके. तीर्थराज, राधिका, रजनीत, वेलकम. आई डोंट हैव सीन यू हियर. आदित्य, कृष्णा, हाउ यू डूइंग? गुड इवनिंग. सुतीत, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. बताइए आंसर. एब्सोल्युटली राइट, BCl2 लीनियर. हम लोग साथ सब साथ में कर लेते हैं, राइट? पहले लेट्स राइट डाउन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर. अगर आप बोल रहे हो लीनियर है, मतलब कि हो जाएंगे इसके दो बॉन्ड पेयर, राइट? व्हाट अबाउट द रेस्ट? डू यू वांट टू हेल्प मी विद दिस? जो मैंने क्रॉस लिखा है उसमें तो नहीं है, और अगर मेरे हिसाब से अगर आप कुछ अलग बोलना चाहते हैं, टेल मी, विल चेंज इट. और अगर मैंने टिक किया है तो मतलब लोन पेयर होंगे. कितने होंगे वो आप मुझे हेल्प करिए, हेल्प मी विद दैट. BCl3 इज टी शेप ट्राइगोनल प्लेनर. टी शेप या ट्राइगोनल? आदित्य, टी शेप, ट्राइगोनल प्लेनर, ये दोनों अलग चीज है. टी शेप मतलब कि टी, ये 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 दीज आर ऑल एटम्स एंड देन देयर इज अ लोन पेयर, राइट? आई थिंक ऐसा कुछ है. टी शेप ऐसा होता है क्या? टी शेप थोड़ा अलग होता है. इट्स नॉट दिस डायरेक्ट, इट्स नॉट दिस डायरेक्ट. आई थिंक आई एम मे बी ड्राइंग दिस इनकरेक्टली. बट हाँ, ऊपर नीचे आगे पीछे राउंड एंड राउंड, दिस इज सी सॉ शेप, टी शेप एक्सेट्रा, वो सब अलग होता है. इट्स नॉट द सेम एज ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड. ओके. हाय हाय हाय. Oh, Ritika, all the best with your school exam. BCl3 is triangular planar. Okay, one is linear. All right, Anita, good evening. Okay, तो मतलब इसमें होंगे 3 bond pair, correct? इट्स गुड टू नो शेप क्या है, जो ट्राइगोनल प्लेनर हो या लीनियर हो. बट आई वांट यू टू फोकस ऑन वो शेप आया कहां से. इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं. ठीक है. SiCl में तो 4 हैं बॉन्ड पेयर. ASF5 में 5 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं. यू अग्री विद मी? डू यू अग्री विद मी? Just give me a thumbs up if you agree with this analysis. 2, 3, 4, 5, 2 and 3. अभी I'm just counting the number of atoms. No, counting atoms. This is the beautiful thing. Counting atoms gives you number of sigma bonds. ठीक है. एंड VSEPR थियरी में देखो, हम लोग रिवीजन भी साथ में कर रहे हैं. VSEPR थियरी में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ही तो देते हैं हाइब्रिडाइजेशन. सॉरी, माय बैड. या लेट्स डिच दैट हाइब्रिडाइजेशन एंगल. थोड़ा कंफ्यूज हो गया. इग्नोर व्हाट आई जस्ट सेड 5 सेकंड्स बैक. यू गॉट टू काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, या, एंड इसी से आपको मिल जाता है. सही बोला एक्चुअली, हाइब्रिडेशन नॉट बैड, राइट.
सही था, it was cool. Trigonal pyramidal, SICL tetrahedral hybridization, Anita question mark hybridization. Yeah, all that comes in later, right? Hybridization आता ही है, absolutely. Anita, this is a precursor to that. मैंने ज्यादा नहीं बोला because see we are doing a revision of the whole thing. What does this mean? This means SP, ये SP2, ये SP3, ये क्या होगा? ये SP3D और ये क्या हो जाएगा? Oh, this one's interesting. ये भी SP3 है. How do I know this? Because it's similar to H2O. देखो ऑक्सीजन और सल्फर एक के नीचे एक है, ठीक है, H2O हो गया तो H2S, they'll have the same hybridization, okay, sp3 और ये लास्ट वाला कौन सा है? ये भी sp3 है. नाउ सिंस मैंने हाइब्रिडेशन की बात छेड़ ही दी है, हाउ डिड आई गेट दिस हाइब्रिडेशन? सेम आइडिया से, काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स, यही हमको करना है यहाँ पे. ओके, धीरे धीरे कर रहे हैं आप लोग, ठीक है. टेट्रा इज फोर्थ, ओके, गुड जॉब. ASF5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके. सिमी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. आदित्य, फराइल, फरियाल, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. Ritika, what's happening? So the shapes are great, but can you help me with lone pair कितने हैं इसमें? How many lone pairs, guys? I have ticked किया इतने bond pair है, इतने lone pair है. Bond pair, do you guys agree with me? Can you give me a thumbs up if the number of, bond pairs is okay with you? How did I get number of bond pairs? I simply added all the atoms. जितने atom उतने lone pair. क्योंकि हमको सिंगल बॉन्ड ही काउंट करना है. लकीली फॉर यू इसमें कोई डबल बॉन्ड है नहीं, बट अगर होता भी तो हम कुछ काउंट नहीं करते. ओके, ठीक है. ओके, ऑलराइट. बताएंगे रितिका, सारे बताएंगे, बट पहले लिख तो लो, बात सुन लो मेरी, इसलिए बोल रहा हूं मेरी थोड़ी बात सुन लो, ठीक है. मैंने अभी तो कुछ बताया नहीं है. आई एम टेलिंग यू टू काउंट कितने एटम है. काउंटिंग एटम्स गिव्स यू बॉन्ड पेयर्स, ठीक है. बॉन्ड पेयर लिखो कितने हैं पहले, बॉन्ड पेयर लिखो. Are you guys okay with the number of bond pairs? Give me a thumbs up अगर bond pair ठीक है. H2S is bent, ठीक है. Okay. आर्सेनिक में कैसे मालूम 5 है? बिकॉज आर्सेनिक तो इसी के नीचे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, और उसके थोड़े नीचे जाते ही आर्सेनिक आ जाता है. तो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. सो 5 इलेक्ट्रॉन है तो इट हैज नो बॉन्ड पेयर्स, आई मीन इट हैज 5 बॉन्ड पेयर्स, नो लोन पेयर्स, ठीक है, कूल. आदित्य, आई एग्री विथ यू, बट प्रोसेस तो सीख लो. रितिका, तुम बता दो, इज दिस ओके? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इज ओके? या अब नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकालोगे? I have confidently said there are 2 lone pairs and one lone pair over there. How do I know this? Because ऑक्सीजन की तरह सल्फर में भी होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड पेयर है तो बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, which is 2 pairs, right? यही मैंने यहाँ पे लिखा है. Similarly, phosphorus is the same as nitrogen. दोनों में होते हैं, well, नाइट्रोजन में टेक्निकली 3 होते हैं भाई साहब, उसके जो बाकी 2 होते हैं वो तो वेरी हार्ड टू गेट आउट, बट श्योर देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. सो अगर 3 बॉन्डेड हो गए, एक हो जाएगा लोन पेयर, 1 लोन पेयर. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. नाउ विद दैट इन माइंड वी विल ड्रॉ देम ऑल वन बाय वन. देखो, BeCl2 एब्सोल्युटली राइट वाज sp हाइब्रिडाइज्ड, एंड आल्सो ये इसका है एंगल 180 डिग्री, इसका 120 डिग्री. दिस इज sp3 या SiCl4. फिर से बता दो, आपने बोला था अगर 4 बॉन्ड है एंड दे आर ऑल रेगुलर बॉन्ड्स, या रेगुलर, इट्स अ रेगुलर शेप, देन द बेस्ट वे टू फिट देम वुड बी कि अच्छा बीच में डालो सिलिकॉन को और क्लोरीन को डालो इस टाइप ऑफ ट्रायंगुलर बेस में, राइट? Cl इस टाइप के बेस में डालो, ठीक है. So now what I have is a triangle at the bottom and triangles here. So this is called, what is this called? This is a pyramid. This is a pyramid, but pyramid के बीच में भाई साहब बैठे हैं ये, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल, राइट? टेट्राहेड्रल. पिरामिड स्पेसिफिकली होगा अगर सिर्फ ये होता, ठीक है. दिस वुड बी अ पिरामिड लाइक द पिरामिड ऑफ गीजा, ठीक है. एनीवे, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल. ओके, गुड आफ्टरनून जितेंद्र साहब. PS3 is trigonal pyramid, ठीक है. हाँ आदित्य, ओके. BCl एंगल इज 120 डिग्रीज, एब्सोल्युटली राइट. आगे बढ़ते हैं. ASF5, 5 में से 3 हो जाएंगे इक्वेटोरियल, 2 हो जाएंगे एक्सियल. पहला वाला सवाल देखो हमने किया भारी केमिकल बॉन्डिंग का, थोड़ा भारी. ये 3 है इक्वेटोरियल, ये दोनों एक्सियल. अब एक्सियल लेंथ इज मोर देन इक्वेटोरियल लेंथ. व्हाई इज एक्सियल लेंथ मोर? बिकॉज यहाँ रिपल्शन ज्यादा है. दिस हैज अ हायर रिपल्शन, बहुत ज्यादा रिपल्शन. तो लाइक ठीक है, थोड़ा पुश आउट कर देते हैं को, ठीक है. सो दिस गाय राइट हियर इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. व्हाई बाइपिरामिडल? 2 पिरामिड बन गए. कौन सा पिरामिड? ये भाई साहब एक पिरामिड, ये दूसरा पिरामिड. कूल. लास्ट के 2 वाटर इज बेंट. ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है, बेंट. ओके, कूल, ग्रेट.
pH3 में ये देखो, this is just like NH3 and this is just like water, H2O डाल दो बीच में, just like water. ठीक है, this is bent and this one is pyramidal, rightly said by Aditya bhai sahab. Any doubts? Fun question, no? Ritika, all good? Okay. बहुत शांत हो गई चैट. सर लेट हो गया फरियाल. It's okay फरियाल, no problem. कोई टेंशन नहीं. Any doubts in this question? पहला क्वेश्चन ही में लग गए 10 मिनट, बट 10 मिनट में हमने कर दिए 6 कंपाउंड क्लियर. We have cleared 6 compounds and also with that 6 compounds we have revised the whole of VSEPR theory. Wonderful, isn't it? Basics वाले तो कर लिया. कोई डाउट है तो बताओ. Is this okay? सबको ठीक समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? या आदित्य, मुझे भी मजा आ रहा है. I really like this. So much so कि when I taught you guys, I taught you guys जुलाई में, that was one of the first chapters I taught you. So I opened up JD और मैंने उसी से पढ़ा है आपको. मुझे मजा आ रहा था. NCERT थोड़ा ऊपर पढ़ा आपको because बहुत मजा आ रहा था मुझे. If you guys have missed that, अगर आपने वो मिस कर दिया by any chance, you can check it out. ठीक है? अगर आपको थियोरी और ध्यान से पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है, इंस्टेड ऑफ 10 मिनट आप चाहते हैं कि मैं आधा घंटा यही चीज से बात करूं, you can go check it out. Spreadsheet में there's a link to all the theory sessions. Okay, next question. Let's go to the next question. अब बाकी सवाल आसान है. पहला वाला इंटरेस्टिंग था, बाकी are all very doable. Geometries of NH3 and H2 molecules are distorted. Tetrahedral bond angle is water is less than that of ammonia. Discuss. दोनों है distorted tetrahedral. Bond angle पानी का is less than that of ammonia. Discuss. Why would that be? This is an easy one, very easy one. Yes, look at that so fast. All right, Faryal, lovely. Simi, yeah. Yeah, तीसरा important भी है, सवाल भी आते हैं बिल्कुल. Simi is saying 2 bond pair. Lovely, yeah. Simi is so fast. Okay, exactly. Simple था सवाल. NH3 looks like this. I know मैंने draw नहीं किया, but कर देते हैं. H भी डाल देते हैं यहाँ पे. ये है oxygen. Fine. ये क्या किया? Oh boy, that was hilarious. ठीक है, oxygen यहाँ पे, ये यहाँ पे. तो since there are 2 bond, two lone pairs, they push these guys closer together. ये angle is going to be lower than this angle. ठीक है. ये एंगल कितना होता है 107 डिग्रीज. ये कितना होता है 104.5 डिग्रीज, राइट? 104 डिग्रीज 5 मिनट्स एटसेट्रा एटसेट्रा. या मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बीच में h, लेट मी फिक्स दैट, दैट्स बगिंग मी. आई विल फिक्स इट बिफोर आई सेंड इट टू. आई विल फिक्स दिस, डोंट वरी. दे आर 2 लोन पेयर. एग्जैक्टली स्नेहल, थैंक यू. गुड इवनिंग भाग्य. बिल्कुल सही स्नेहल, थैंक यू. आई डोंट थिंक आई हैव सीन यू हियर बिफोर, बट अमेजिंग. द मोमेंट यू आर हियर, you gave a very interesting point of view that because there are more lone pairs, they push the bond pairs closer together. इसलिए ये एंगल हो जाता है कम, and this angle is 104.5 and this 107 degrees. There is greater repulsion. हो गया, simple question. Let's go to the next one. Exactly. Swadeep has written very nice things that lone pair repulsion is greater than bond pair repulsion, or even bond pair lone pair, and this is greater than bond pair. सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Thank you, Swadeep. Next question. H3PO3 can be represented by structures 1 and 2 as shown below. Can these two structures be taken as the canonical forms of the resonance hybrid? ये canonical form क्या भला होती है? We'll learn that also through this question. Resonance hybrid representing H3PO3. If not, give reasons for the same. So पहला, yes or no. That is what I want you to put in the chat. Yes or no क्या? Are these canonical forms? मतलब resonance hybrid के forms है कि नहीं है? ये मुझे आप बताइए चैट में, यस और नो. और उसके बाद आप कारण भी बता सकते हैं. अगर आप चाहें तो साथ में ही कारण बता दीजिए. अगर साथ में कारण नहीं आ रहा है, यस नो पहले बताइए, उसके बाद यू कैन अनदर इन डिफरेंट चैट यू कैन टेल मी व्हाट द रीजन इज. सेम इन एनसीईआरटी? यस आदित्य. ओके. Question is tricky. All right, Ritika. Yeah. See, NCERT questions are good. At least I've picked up good question. Slightly the slightly more effort लगाने वाले question as compared to the easy ones. But if you have any doubts, Ritika, please ask me. I'll help you out. आपका केमिस्ट्री एग्जाम आज हो गया? 11th का एग्जाम था आपका. How did it go? और कल एग्जाम है? नहीं, आज सैटरडे, आज हो गया होगा. Any doubts? Please tell me. What do you think? This looks a little scary. No. Okay. YT and Simi are saying no. Okay, all right. Why no? Does it help if I draw it a little bit easier? I mean, I don't like seeing all these dots. Just get rid of these dots. Lewis structure तो है, but Lewis structure मुझे थोड़ा confusing लग रहा है. तो Lewis को हटा के हम लोग अपना बिना Lewis वाला, let's make it like this. This is what this is, right? Maybe will this help? Give me yes or no. How many of you saying no? How many of you saying yes?
YT, Simi, Snehal are saying no. Okay, Ritika is saying yes, or Ritika is saying yes to something else. She's saying yes to something else. This is not canonical. YT giving us the answer. Mind blasting. I guess it is a yes. Okay. Faryal. Inakshi Bagh saying no. Okay. And किसी ने कोई कारण भी बताया मुझे. YT. यार तुम नाम थोड़ा बताओ कैसे pronounce करो मैं. Sugikuni. Okay. Sugikuni. That's kind of hard. That's a tongue twister. Sugikuni says we can shift double bond, not the element. We can shift electrons. Double bond मतलब electron. ठीक है. Can move electrons, not elements. If you move elements, what happens? You get isomers, and you want it to be the same element. Well, isomer का तो स्कोप नहीं है यहाँ पे. Same, you want to be same compound. Isomer होता है उधर हमारा क्या बोलते हैं उसको? What is it called, bro? The organic chemistry में isomers होते हैं. But here, at this point, if you change things, you get a different compound. And these are different compounds, if at all they exist. In fact, I don't think they exist like this. This form is weird. I have not seen this form personally. I have seen this form a lot more better than this one. So I guess you're saying, oh, you know what? This guy will jump here and somehow I don't see it happening. But yeah, whatever. Yeah. So these are not canonical forms. Probably it is. But what is isomer? Shivam. Okay. Tsunami can be a good name. Super duper. Arey bhai. Yeah, they can't be taken as canonical forms because they're not resonance structures. The bonding itself has changed, so they're not. That's clear. But someone's asking, what is isomers? Shivam Narula. That isomerism concept is valid in organic chemistry. Here, I don't think you can call them isomers. There are different compounds, if at all this kind of bonding exists. Does this bonding effect exist? I haven't seen it. If it does, we'll have to check it out. I'm going to open this up quickly, JDL, and check. While you guys do the next question, I will check. But I don't think it does. If it does, give me links of this and we'll check it out. So yeah, the answer according to me is no, and according to all of you as well, it's no. Ritika, I hope you understood, and somebody else also here. Faryal, I hope you also understood why it's not. They are not resonance hybrids. Okay, let's go to the next question. Yeah, exactly. Position of atoms remains the same, but the position of electrons change. Yes, Faryal. Thank you. All right. Although CO2 and H2O are triatomic molecules, the shape of H2O molecule is bent while that of CO2 is linear. Explain this on the basis of dipole moment. अरे बाप रे. You may be want आपको लग रहा होगा चलो इसको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए. लास्ट लाइन बोलिए explain the basis of dipole moment. And this is wonderful because this is a practical application. ये है practical application of everything you've learned so far. It's wonderful because what can you actually measure? You can measure dipole moment. बाकी चीज़ अब measurable quantity है नहीं. Right? All this concept of electron या IMI किसको मालूम कहाँ इलेक्ट्रॉन, but dipole moment आप बहुत आसान तरीका से देख सकते. Put it in between electric field, and if it lines itself in this way, that way, you can turn and find out. Try it out. Wonderful question. What do you think? Looking up H3PO3. Pretty sure it doesn't have that thing, but it doesn't hurt to check. Group 13, group 14, H3PO3, I think group 15 में होगा ना. Oxo acids. H3PO3, PCl5, oxide of nitrogen, H3PO3. Oh, orthophosphoric acid. Okay. No, I don't see that form at all actually. Looking at JDL, I don't see that form at all. मुझे तो नहीं दिख रहा है. If you find it somewhere, please feel free to ping me. I've just looked at JDL. I did not find that form. Oh, what do you look at that? Interesting. Orthophosphoric. Oh, geez. That's interesting. Okay. All right. Shivam, Narula. Narula, there was a restaurant called Narula's in Delhi. It's a very nice place. Hold on. I'm just going back to this one. Which? And in fact, J.D. Lee says that this is the correct one. मैंने गलती से बोल दिया था कि ये वाला सही है ना. This is the right form. According to J.D. Lee, ये है सही form. Okay. And it kind of makes sense because H3PO3 is a dibasic acid. It's not, वो जल्दी में मैंने शायद उल्टा बोल दिया. But
it's a dibasic acid, so that means it must have two OH groups. OH मतलब कि acidic hydrogen, यहाँ से hydrogen जा सकता है, right? So this must be the right structure. Whereas this other guy here, this is wrong because it's not. This makes it a tribasic acid. So ये तो सही structure हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है. In fact, H3PO4 का होता है this right here, yeah, POH, OH, OH, and this is H3PO4. So this, yeah, doesn't exist. Okay, cool. Well, it's good to check, good to have a book for reference right in front of you. Okay, cool. इसको करते हैं हम लोग, क्या कर रहे थे? Basis of dipole moment बोला है, twist. It could be due to electronegative or double bond, single bond, dipole moment. Yes sir, फरियाल dipole moment. Okay, ठीक है, क्या करें? So experimentally ये वैल्यूज हमको मालूम है. CO2 का dipole moment 0 होता है. अच्छा, ठीक है. और H2O का नॉन जीरो होता है. अगर जीरो है तो क्यों हुआ? अगर दो ऑक्सीजन कार्बन को दोनों ऑपोजिट तरीके से खींच रहे हैं, दैट मींस डाइपोल मोमेंट कैंसिल्ड आउट. एंड H2O में ऐसा नहीं है. इट्स अ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट. दिस प्रूव्स कि कुछ तो दाल में काला है. I had really good dal today for lunch. But here's the deal, right? Look at this. This is a structure of CO2. You know how it works, right? This is where you have a less electronegative element. And here you have a more electronegative element. Right? This is the way you draw dipole moments. And if it is this way, dipole moment मतलब कि vector addition होता है. So you have to see direction as well as magnitude, right? So magnitude same है, direction opposite हो गया, तो cancel out हो गया. Vectors they cancel each other out. इसीलिए इसका dipole moment 0 हो गया. In case of water, you all know this कि bent होता है. And because it is bent, look at this, bent में or whatever, it doesn't matter that the fact that it's bent is irrelevant. The main thing is कि overall जो dipole moment है, it gives you a value of 1.84 diopters. नहीं, diopters नहीं, diopter तो आँख वाला होता है, right? 1.4 E D by, yeah, diopter, funny guy. खैर, D by क्या होता है? Unit of this thing. Okay, 0 because Dalton. Yes, okay, great. By the way, एक और छोटी चीज. If you've got oxygen and a lone pair, or say nitrogen and a lone pair, हमेशा it doesn't matter. Even fluorine में lone pair तो होता नहीं है, तो we won't talk about that. Chlorine and a lone pair. Always direction will be this way because the electron is going to be more theoretically electronegative than all of this, than all of these. Right? Chota side. It's simple idea. When you're drawing this way, right? हमेशा head arrow का will be towards a lone pair. I've taught you all this in my theory session, but since हम लोग आराम से इसको कर रहे हैं, कुछ questions कर रहे हैं, let's do it this way. Yeah, okay. D by, exactly. Sui Kuni, I was messing with you guys. D by, yes, D by it is. So this is the reason, okay, because of the shape. Now, because I've got this 1.84, that's when scientists decided कि let's explore this. क्यों है 1.84? And then they're like, अच्छा इसका shape ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और shape होगा. And one thing led to another, and figured a lot of stuff out. Here, that was this one. Next question. The skeletal structure of CH3COH as shown below is correct. But some of the bonds are shown incorrectly. Write the correct Lewis structure for acetic acid. ये है भाई, कार्बन में होना चाहिए 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन में होना चाहिए 2, हाइड्रोजन में होना चाहिए 1 बॉन्ड. यही सिंपल चीज है, इस आइडिया को लगाओ इसको सॉल्व करने के लिए. या yes फरियाल, absolutely right. Bond, the dipole moments don't cancel each other out because of this angle here and also direction. It's not just that. देखो इन तीनों का डायरेक्शन है ऊपर, इसका है इट्स दिस वे. सो ओवरऑल आई थिंक वुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट? इट्स आल्सो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. एनीवे, व्हाट अबाउट दिस वन? एग्जैक्टली, कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन. देखो, दिस इज अ क्राइम. दिस वन इज अ क्राइम, राइट? आल्सो 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए इसके. तो एक तो ये बॉन्ड हटा देते हैं, दैट विल सॉल्व बोथ आवर प्रॉब्लम्स. इफ आई रिमूव दिस वन बॉन्ड, इट सॉल्व बोथ आवर प्रॉब्लम्स. ओके, देन क्या हो रहा है? अरे इसका एक ही बॉन्ड है. अगर ऑक्सीजन में एक बॉन्ड होता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है, मतलब कि 2 और इलेक्ट्रॉन इधर होने चाहिए. दैट इज पॉसिबल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो सकता है, ठीक है. इफ आई ऐड NaOH, देन हो सकता है कि ऑक्सीजन का निकाल दे. यू नो हाउ इट वर्क्स, राइट? आपने अगर थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक पढ़ा है. एंड इफ आई हैव दिस एंड आई ऐड NaOH, इट फॉर्म्स अ फिनॉक्साइड आयन. तो उधर पॉसिबल है कि मैं उसको आई राइट एज दिस, राइट? अ नेगेटिव चार्ज इज पॉसिबल. बट उस केस में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, राइट? इट हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वो तो अलग चीज है, बिकॉज ऑफ बेंजीन. नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. बट मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ सिंगल बॉन्ड डज नॉट वर्क. सो हियर इज अनदर प्रॉब्लम. एंड यहाँ पे भी देखो 3 ही है. ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डज नॉट मेक सेंस, रैंडमली हैंगिंग अराउंड. सो इधर एक और बॉन्ड आ जाएगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स गो अवे, राइट? ओके,
ओके, और बाकी क्या, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो ठीक लग रहा है मुझे, है ना। नाउ दैट वी हैव डन दैट, देखो बोथ दिस कार्बन 1 कार्बन 2 दे बोथ हैव 4 बॉन्ड्स, ओके, कार्बन, both the oxygens have 2 bonds, oxygen 1 oxygen 2 they both have 2 bonds, okay, great, all hydrogens have 1 bond, okay, we are done it, sorted, हो गया, हो गया, you have done this question, that's great. No, it does not, Snehal, exactly. If it has a lone pair, that's a good question. If it has a lone pair, Snehal, it's extremely reactive, right? There is this species called a carbene. Okay, this is a very strong electrophile. अगर आपने वो पढ़ा है, have you guys read this Riemann-Tiemann reaction? सही वही बोलते हैं ना? अगर if I'm saying this wrong, please help me out. Riemann-Tiemann reaction. What happens here? You add NaOH plus CHCl3. अब ये दोनों रिएक्ट करके देते हैं CCl2 this. एक्चुअली बीच में एक और चीज होती है, इसमें होता है CCl3 माइनस बनता है और H प्लस भाई साहब निकल जाते हैं, Na प्लस रह जाता है, पानी निकलता है। अब ये CCl3 माइनस इतना स्टेबल नहीं है, so this minus charge goes here and what you get is this plus Cl minus, and then this guy attacks my friend here, O minus Na, यहाँ पे, अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब, इलेक्ट्रोफिलिक, या दिस राइट हियर नेगेटिव, इट गोज हियर, गेट्स अटैच्ड, उसके बाद बन जाता है ये, थोड़े और बीच में स्टेप्स हैं, ठीक है, CCl2 becomes COH whole twice, पानी निकल जाता है, etc etc, right? There's a way to make this thing. Why did I talk about this? Because किसी ने मेरे से पूछा क्या इस पे लोन पेयर होते हैं? No, normally नहीं होते हैं, that's a very reactive species. Yeah, non-classical intermediate, vast अतीत, बड़ी बड़ी चीजें बोल रहे हैं. You have an alcohol? Okay, okay. All right, thanks Gurukul Academy, thank you for the appreciation. It is phenoxide, yes, Ames, lovely, 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 you guys are brilliant. So double bond लोन पर इलेक्ट्रॉन कार्बन पे नहीं होते हैं, 4 बॉन्ड नहीं है इसके, तो इसलिए हमको ये सब फिक्स करना है, and the final answer would be this, which is an easy question. But देखो इस क्वेश्चन में हमने काफी बहुत ही डिटेल वाली चीज को एक्सप्लोर कर दिया, वंडरफुल थिंग, 2 थिंग्स, एक तो ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड हो ही नहीं सकता है, नीड्स डबल बॉन्ड, कार्बन में तो 5 बॉन्ड नहीं 4 ही होते हैं, और अगर 3 बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स अगर बचे हुए तो दैट्स नॉट अ स्टेबल थिंग, दे वुड वांट टू गो समवेयर, right, and form this bond instead. So this is a lot more stable structure than what we saw before. Okay, चलो अगला सवाल देखते हैं, easy question, easy question. What is meant by hybridization of atomic orbitals? Describe the shapes of sp, sp2 and sp3 hybrid orbitals. देखो बहुत सिंपल सवाल आ गया, बहुत सिंपल आ रहे हैं सवाल, try this out. This one also doable, very doable. Yeah, absolutely. Sugikuni, I hope I got that right this time. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब तो सिंपल है, राइट? यू स्टार्ट ऑफ विद सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स, व्हेन दे कंबाइन दे गिव यू सेम एनर्जी, सिमिलर, सेम, एग्जैक्टली सेम एनर्जी और सेम शेप, सिमिलर एनर्जी डिफरेंट शेप्स इज व्हाट यू स्टार्ट विद, व्हाट यू गेट इज सेम शेप, सेम एनर्जी, सेम नंबर, मतलब एक S और एक P देगा 2 SP, एक S और 2 P will give you 3 SP2, राइट, एक S और 3 P मिल गए 4 sp3 ऑर्बिटल, सबके शेप होंगे सेम, फाइन, दिस इज व्हाट यू गॉट टू से, एंड बाकी तो आप आंसर बता ही रहे, यस, रीमन आपने बता दिया, ठीक है, sp will have linear shape, trigonal, triangular, सही है, भाग गया सतीश, वो तो बहुत जल्दी बोला, बट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी, अगर कोई कुछ 11th का एग्जाम लिख रहा है, combination of different similar energy orbitals, different shape also, you get same number, shape, equivalent energy orbitals, right? इसमें क्या होगा, देखो S और P ज्वाइन करके बन जाएंगे 2 sp orbitals, इनका होगा एंगल 180 डिग्रीज, या सिमिलरली 1s and 2p, and this one is interesting, this is where things start getting interesting. कभी कभी I have seen people write this, एक P इधर एक और P और ऐसा कैसे होगा भाई, एक अगर x एक्स हो दूसरा y का होगा, एक 2x के कहां से आ जाएंगे, है ना? थिंक अबाउट इट, थोड़ा सोचो, अगर मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, कार्बन है इतना, राइट, दिस इज व्हाट इट इज, एक्साइटेड स्टेट, ओके, px py pz, अगर मैं बात कर रहा हूं डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, मतलब ये भाई साहब हो जाएंगे आपके pz में एज इट इज रह जाएंगे, बोथ ऑफ दीज विल पार्टिसिपेट, सो px py, so you need to draw like this, you have to draw like this, एक ऊपर एक नीचे, right?
फाइनली इट डजंट मैटर, आई नो यू गेट sp, क्या बोलते हैं, sp2 ऑर्बिटल्स, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, बट ड्रॉ करते समय अगर आप कहीं बोर्ड्स में कहीं थियोरी में कर रहे हो, यू नीड टू ड्रॉ लाइक दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, अगर ऐसा है तो ठीक है, sp3 ऐसा बनेगा। कूल, शैल वी मूव ऑन? कोई डाउट है तो पूछ लो। ये आंसर जो आपने दिया सबने सही दिया, बट गो इनटू दीस डिटेल्स, ये जो एक्स वाई जेड बता रहा हूं मेक सेंस ना, कार्बन का एक्साइज स्टेज, यू नीड टू नो द थ्योरी इनसाइड आउट। जेई का फोकस है, नीट का फोकस है, ईदर वे दिस विल हेल्प यू। ऑलराइट, सो दीज आर योर थ्री अमेजिंग ऑर्बिटल्स। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे जाते हैं। डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इफ एनी ऑफ द एल्यूमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एल्यूमिनियम एटम में क्या कोई हाइब्रिडाइजेशन बदल रही है, यस या नो? बताइए, थोड़ा सोच के बताइए, बताइए बताइए बताइए। ओके, AlCl3 reacts with Cl minus, ये कहां देखा है आपने? Have you seen this somewhere? If you have finished 11th standard, you have definitely seen this somewhere, कहीं ना कहीं तो देखा है। Tell me where you have seen this. You may not have seen it, but this is an important reaction, a named reaction in organic chemistry, इसीलिए बोलते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग करके जाओ तभी ऑर्गेनिक करोगे ठीक से। Yeah, let's try this one out, इसको ट्राई करो। Everyone saying yes, okay, कहां देखा है आपने? Where have you seen it? एक मीनाक्षी, स्नेहल, सुईकुनी, भाग्य ऑल सेइंग देखा है। कल फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, अरे वाह, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट तीर्थराज, ऑल द बेस्ट। सो नाउ इसमें आप लोग, what, how do you start this question? How do you start? Can you help me with that? With a question like this, what is the first step? जो दिमाग में आता है बताओ। In AlCl3, Al contains 3 bond pairs of electrons and 0 lone pair electrons, ठीक है, good place to start। मतलब AlCl3 aluminium is going to look like this, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है, तो sp2 हो जाएगा उसका, राइट, इट शुड बी sp2। अब व्हाट इज नेक्स्ट, दिस sp2, क्लोरीन आके क्या करेगा, व्हाट इज क्लोरीन गोइंग टू डू, समझा दे, ओके श्योर। सो sp2 and AlCl3, ओके, AlCl4 minus, Al atom contains 4 bond pairs of electrons and 0 lone pair electrons, okay, so sp3, okay, I like what you're saying। so Al in AlCl3 is this। फिर हम लोग क्लोरीन डालना शुरू करते हैं, क्लोरीन डालना शुरू करें तो तीनों क्लोरीन इधर आ गए। अब जो लास्ट वाला क्लोरीन है which is Cl minus, it has 2 extra, it has 8 electrons, it has octet, right, 8 electrons। so वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे देता है and it comes here, yeah, specifically speaking this is Cl minus, these 2 electrons are both from Cl minus and the overall is sp3। so the hybridization change from sp2 to sp3, okay, cool, all good, yeah, exactly, all good। कोई डाउट है इसमें बता दो, सोचो आराम से, कोई जल्दी नहीं, बताओ व्हाट यू थिंक। एंड बाय द वे, ये वाला P होगा या फिर S होगा? आई थिंक P होगा, राइट, बिकॉज Cl माइनस टेक्निकली हैज 1 2 3 4 5 6 2P 2S, तो यू आर बॉन्डिंग विद दीज गाइज हियर, सो इट मस्ट बी sp2 and P, these combine to give me sp3, makes sense, makes sense, इसका P और उसका भी P, so this P of aluminium and P of chlorine, okay, great great great, क्लोराइड आया, ठीक है, कूल। फरयाल, कोई डाउट है? इज ओके, shall we go to the next one, similar one, similar idea। is there any change in hybridization of boron and nitrogen atoms as a result of the following reaction? bf3 plus nh3 gives me bf3 dot nh3, देखो लिखा है f3b dot nh3 because the bond is between nitrogen and boron, that's to tell you that, okay, the reason is written f3b dot nh3 क्योंकि bond form हो रहा है बोरॉन नाइट्रोजन के बीच में, that's a big hint, that's a big hint, okay, great फरयाल, that's great, this is a big hint of this question, try करो इसको, क्या लगता है यहाँ पे? see here the main thing that you've got to do, you've got to keep in mind is कि most welcome is कि this guy, you know their individual things, right, आपको idea already, bf3 this should be a lone pair, right, this is
sp2, ये है sp3. Cool. So if I were to draw their excited states, or their, because that's where because they're already bonded, right? तो इसलिए excited states ये draw कर रहा हूँ मैं. sp2 sp3, ठीक है, और लोन पेयर है, 3 है लोन पेयर. ओके, cool. What happens here? This empty orbital, let me draw that. इसको draw कर देता हूँ. I'll explain this to you. Let me draw that. So this is that empty orbital. Empty orbital. And empty orbital को देखते ही, look at this. These lone pairs start glowing. No, don't start glowing. I'm highlighting it by showing that light blue color. Empty orbital. Let me go there. That's exactly what happens. This guy like does this, turns around, and goes ahead. That's exactly what it's going to do. Look at that. That's exactly what it does. And it forms this adduct. And would you look at that? यहाँ पे भी sp3, यहाँ पे भी sp3. Cool. Technically, I should also be drawing these electrons here, right? The white is, let's say, the white pertains to boron and nitrogen, right? What about the other colors? This green pertains to F and H over here. And this blue specifically is the lone pair that comes on to this. So let me draw that properly with this blue here. Yeah, this is the lone pair that comes from nitrogen. Is this clear? Now that I've color coordinated सब कुछ कर दिया है, ये समझ में आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है? तो इसकी hybridization तो बदली when this formed this adduct, but कैसे? Very cool way of understanding it. No funky graphics, कुछ नहीं, just basics. Exactly, it has an MTP orbital, Raj. Absolutely wonderful, isn't it? Chemical bonding में काफी मजा आता है. Shall we go to the next question? Any doubts? कोई doubt है तो बता दो. Yes, and sp2 to sp3 for boron. Okay. Draw diagrams showing the formation of a double bond and a triple bond between carbon atoms in C2H4 and C2H2. Now, how do I do this? I'll do this one for you, right? C2H4, CH3, C2H2 होता क्या है? This is a triple bond and this is a double bond. That's the difference. Okay. Draw diagram कैसे करोगे? One more question and time to go to maths. All right. So, all right. Bye-bye. See you. What do I do over here? Now, some of these are sigma bonds. Some of these are pi bonds. So let's highlight that first. ये हो गया pi, ये हो गया pi. जो blue is basically pi. यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. Let me change color back to my good old white. Let's do yellow. Let's do yellow. So that is very different. So I'm going to draw the excited state of carbon. That's what I do for hybridization, right? Out of these, how many can I use? Let's look at C2H4 पहले. C2H4 मतलब एक carbon has 3 bonds. One carbon has 2 hydrogen bonds and one of this, right? And it has a double bond, which is right here. But in hybridization, I don't count the double bond. In hybridization, I don't count the double bond. I count only one of them, just sigma, not the pi bond. All right. So I can say that this is sp2 hybridization, जहाँ पे एक जो last वाला is, one electron sitting there happily, and I get 2 of that. I get like a mirror image. I have 2 carbons which both have 1 extra electron. Those are the ones that form the pi bond. These blue ones form the pi bond. This is how bonding happens in C2H4. You can clearly see that the hydrogen atoms are in plane with each other, and the blue p orbital is out of plane, perpendicular to that. That forms a pi bond. Okay, this is C2H4. Cool. Clearly given NCERT theory. Exactly. Similarly, C2H2 में क्या होता है? एक के बजाय 2 खाली ऑर्बिटल. sp हो गया, 2 खाली ऑर्बिटल, 2 empty orbitals, and they are perpendicular to each other. Yeah. So in one line, or in a linear fashion, I have C H bonds and C bonds. The pi bonds are perpendicular to each other and out of plane of both of these. This is the answer to this one. Yes, exactly. Simple, badhiya, beautiful. Let's move on. Okay, chalo. That was a bit of theory that will help you solve this next question. Which hybrid orbitals
are used by carbon atoms in these molecules. इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ. I've got 5 things. तो मुझे 5 चीजें डालो सीधे चैट में, साथ साथ में डाल दो 5 चीजें. We'll do that. That will be useful. Yeah, really, really will be. करो कोशिश. Let's number the carbons. यहाँ पे इक्वलेंट है, यहाँ पे कार्बन 1 एंड कार्बन 2, दो अलग अलग टाइप के कार्बन है. इसमें 1 सेम है, सेम कार्बन 1. ओ यहाँ दूसरा कार्बन है, बिकॉज सी दिस गाय इज एक्चुअली दिस. It's like hiding in plain sight. This is an imposter. This one's an imposter. Be careful. Okay. Similar with this guy. There's one carbon and this separate carbon. क्यों? क्योंकि ये COOH है. Right? So these two, be careful of them. They're both imposters. Two different carbons. All right. So A में है sp3 and C2 is sp3. Okay, cool. What about B? Absolutely right. A सबको पकड़ लिया. Swatit is B, sp3, sp2, sp2. Okay, lovely. So sp3 and ये जो मैंने स्टार डाला है which is sp2. Lovely. What about the next? Good job. Faryal, Sukiguni, Swatit, good job. तीर्थराज, बिल्कुल सही. सबसे पहले बताते हुए, okay, C1 is sp3, C2 and C2 sp2. Okay, perfect, तीर्थराज. What about C and D? C में तो चिल है, C में तो कुछ नहीं करना है. C बता ही देता हूँ, C छोड़ो, C is all sp3, कुछ नहीं सोचना है. What about D and E? Very doable. I think these are direct questions, very easy NCERT questions. कोशिश करो. Because you have to count the number of atoms, right, bonded to carbon. That will give you hybridization. Just count bonded atoms and lone pair, but there are no lone pairs here on carbon at least, so it's cool. It doesn't matter. Yeah, all sp3. Exactly. C is all sp3. E is sp3 sp2. ठीक है, बढ़िया, good job. What about D? D is sp3 sp2, just like E. D and E are the same ना. देखो ये है, अरे ये क्या होगा, हाँ, this and this are the same. They are the same. This is a aldehyde, this is an acid, this is an alcohol. Both of these the same. इसमें थोड़ा अलग. हो गया. Wow, Kukdiya Prasad ji, are you like messing with me? Because I'm not a bio teacher. If you couldn't tell, how do genetic and epigenetic factors interact to regulate the intricate process of gene gametogenesis in mammals, and what are the key molecular mechanisms involved in ensuring proper germ cell? Do we have a bot among us? Is that the new imposter? There are bots on YouTube? I have no idea, bro. You can ask Ankita when she has a session. Okay, this is the answer to this one. अगला सवाल करते हैं. Distinguish between a sigma and a pi bond. सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में कैसे करें डिस्टिंग्विश? 3-4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एम्स एस्पिरेंट 3-4 तो ज्यादा हो गया, बट आई थिंक 2 क्वेश्चंस श्योर, 2 क्वेश्चंस वेरी लाइकली. 3-4 maybe you'll need bonding ideas to solve questions in organic chemistry. उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है 3 और 100 whatever, but let's be realistic. बॉन्ड ऑर्डर वो सब चीज के एक तो आ सकता है यार. केमिस्ट्री का है, ओके ठीक है, तो हमको इतनी केमिस्ट्री नहीं आती है कुकड़िया, ठीक है. Distinguish between sigma and a pi bond. Sigma bond is always end to end. Pi bond has a lateral overlap. If you look at, if I draw a thing over here and you're doing it this way, okay, end to end मतलब कि this way, or this way. Yeah, these two things are sigma bonds. Or also third, obviously, this one, this is also sigma bond. And lateral मतलब always like this. Yeah, this is a lateral overlap. Not that great. Overlap's not that great. Yeah, and that's what makes this sigma bond pretty strong, and this is not that strong. But obviously, sigma plus pi is stronger than sigma. That's why I say double bond is stronger than single bond. काफी बार students इस चीज को मिस कर देते हैं. They say कि a double bond is stronger than a single bond. मतलब pi bond must be stronger than a sigma bond. But थोड़ा याद रखो. देखो, डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई दोनों होता है ना? तो उसकी तो इट विल बी मोर देन जस्ट द सिग्मा बॉन्ड, राइट?
इसीलिए डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड, बट जस्ट द सेकंड बॉन्ड इज वीकर देन द फर्स्ट बॉन्ड. व्हाट इज सेकंड बॉन्ड? द पाई बॉन्ड. पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड. सिंपल सी चीज है, बट जल्दी जल्दी वो स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो ध्यान रखो. ठीक है, ओके. सो पाई प्लस सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा इटसेल्फ. ठीक है, दैट्स ओके. And what are the kind of overlaps? SS, SP, PP. I've already told you this. SS, SP and PNP. And इसमें सिर्फ P और P overlap ही हो सकता है. Lateral. Yeah. All right. Yes, yes. Brilliant. Kukriya, I see that you're having a very nice Saturday. Good, good. करते रहो. I don't mind this kind of spam. मैं इस बेचारे को ब्लॉक नहीं करूंगा, टाइम आउट कुछ नहीं करूंगा, करने दे इसको. This is fine. I don't mind this kind of spam. As long as it doesn't disturb you guys. ठीक है. And rotation, this one's interesting. इसको क्या बोलते हैं? What is this called? It's called something ना. Rotation around single conformation, conformation नहीं, conformers, right? Staggered, eclipsed. ये सब चीजें थी ना. वो इथेन के हम लोग ये सब पढ़ते हैं. न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसका ये प्रोजेक्शन, वो प्रोजेक्शन. दिस इज eclipsed, this is staggered, this is staggered, this is eclipse, etc. etc. That's because single bond के across free rotation होता है. Double bond के हो ही नहीं सकता, because you got a single bond and you got that. It's like, you know, अगर फेंस है, फेंस तो नहीं, अगर ऐसा है तो इसके बीच में तुम लोग रोटेट कर सकते हो. ठीक है. Now there's suddenly a second thing like a regular fence. You can't twist and turn this. It's not possible. That's exactly what this is. And lastly, ये symmetrical है around the internuclear axis. इसका क्या मतलब हुआ? This is the internuclear axis. ठीक है. It is symmetrical, ऊपर नीचे, but this is not symmetrical. Okay, not really. It's not symmetrical along the internuclear axis. There's two above and below the plane, etc. etc. ठीक है. Theoretical सवाल कर लिया हम लोगों ने, आगे चलते हैं. It's okay, करने दो यहाँ टाइम पास, no problem for यार, कोई टेंशन नहीं. Wow, bingo. Geneticist sounds like a गाली. It's not, but it so sound like you geneticist. Lovely. All right. 5 दिन में एग्जाम है. All the best, कुकड़िया. बायो का एग्जाम 5 दिन में. टिप्स देने यार. अंकिता से पूछो. She's a wonderful bio teacher, one of the best we've had. Generally amazing. 5 दिन बायो एग्जाम है क्या? 15, आज 17 तारीख है. 17 मतलब 5 मतलब 22 दिन. 22 February is bio exam. Is it? कहाँ पे? Where though? 11th या 12th? बता दो. थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं. We don't mind. Okay. Use molecular orbital theory. MOT हो गया शुरू. है हमारे पास 12 मिनट और MOT हो गया शुरू. Use molecular orbital theory to explain why BE2 molecules do not exist. Why does a BE2 molecule not exist? क्यों? बताइए, थोड़ा बताइए. बताइए क्या कारण है इसका. सोचिए. Very direct, very doable. And वाइवा में पूछा जाता है काफी बार, अगर to know if you really know the basics or not. Good question, good question. NCERT has some wonderful questions. A hint is कि if I were to let's assume that the molecule can get formed. Let's assume that BE2 फॉर्म हो जाता है. अगर फॉर्म हो जाता है फिर उसको हम लोग डिस्प्रूव करेंगे कि अरे फॉर्म हो गया because which gave some property. वो प्रॉपर्टी तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए the molecule doesn't exist. Okay. This kind of hard? No, it's okay. Faryal, stick around. ये हो जाएगा Faryal. This is okay. Don't worry. Very doable. We'll do this. Once you do it, you'll be like, यार कितना simple था. Let me help you with this. So BE2, if it exists, let's assume list. अबे dyslexia kicking in. 3. What am I doing? 3 बार. Let's assume it exists. Okay. So if it exists, then BE2 will be 8 electrons, right? क्यों? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, 1, 2, 3, 4, 5. So since है atomic number 4, इसमें होंगे 8 इलेक्ट्रॉन. 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि कुछ बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, वो याद आ रहा है ना? स्प्लिट होता था ऐसे. 1s के जो है इलेक्ट्रॉन्स will become sigma 1s and sigma star 1s. बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग. और ऊपर हो जाएंगे 2s. ये इधर भी डाल दो 1s. 2s के सिमिलरली विल गो हियर टू बी sigma
2s एंड सिग्मा स्टार 2s, ये होंगे एंटी बॉन्डिंग एंड ये होंगे बॉन्डिंग। वाई एंटी बॉन्डिंग ऊपर? क्योंकि ज्यादा एनर्जी होगी, बॉन्डिंग की कम एनर्जी होगी। वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन इंटरेस्टिंगली दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी नाइसली इन ऑल ऑफ दिस, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। व्हाट वाज द प्रॉपर्टी टू डू नाउ? व्हाट वाज द प्रॉपर्टी? अरे वाह पीयूष चौधरी, आते ही माइक ड्रॉप मोमेंट। नो वेकेंट ऑर्बिटल, सरीम सेज नो वेकेंट ऑर्बिटल, ABMO is greater than BMO says स्वतीत। फरियाल, पीयूष जी की बात सुनिए, पीयूष जी बिल्कुल सही चीज बोल रहे हैं। जब पूरा हो गया, देर ऑल फिल्ड, बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आया था, बट अभी याद नहीं आ रहा। कोई नहीं तीसरा, ओ याद आ गया, एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग का सब्स्टिट्यूशन 0 होगा, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। देखो सही, वंडरफुल। सो बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन इज एग्जैक्टली दैट, यू एड अप ऑल द bonding orbital electrons, subtract all the anti-bonding electrons, divide by 2. This gives you the bond order. In this case, bond order is 4, 2 and 2 4, and ये वाले 2 and 2 4, दोनों को subtract करो, bond order हो गया 0. अगर bond order है 0, then it means it does not exist. Now, the same thing you can extend to Ne2, neon 2, why does it not exist? सेम आइडिया से आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, बोर्ड में बेरिलियम आ जाएगा, मे बी नीट में Ne2 आ जाएगा, क्या मालूम, डायरेक्टली नहीं आए तो Ne2 और डायमैग्नेटिक कुछ ना कुछ रैंडम चीज पूछ लेंगे आप लोगों से, इट्स पॉसिबल। यस, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, लेट हो गया, इट्स ओके पीयूष, नो टेंशन, बाद में देख लेना। Okay, brilliant. Great. Wonderful students. Wonderful students. Let's pick up the speed here. We have a couple of minutes to go and a couple of questions. Exactly, in fact, I have exactly 3 questions. Okay, I think we can do them all. I think हम लोग खत्म कर सकते हैं। Compare the relative stability, अब आ रहा है भारी चीजें। Compare the relative stability of the following species and indicate their magnetic properties. Relative stability hint दे रहा हूँ, will come from bond order. Magnetic properties will come from, कहां से आएगा बताओ? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? या तो होगा पैरामैग्नेटिक या होगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, मतलब कि नो इलेक्ट्रॉन्स एंड सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा डायामैग्नेटिक, सम विल बी पैरामैग्नेटिक। सो दिस व्हाट यू टेल मी, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो बहुत स्टेबल, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम वो कम स्टेबल। दीज टू आइडियाज यू हैव टू टेल मी। एक एक करके करें, कौन सा वाला पहले करेंगे? ऑलराइट, ग्रेट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सुपर डुपर फॉर, ऑलराइट, ग्रेट। सो फर्स्ट थिंग टू डू is write down number of electrons in each of these species. 4 species है, सबके इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। सबसे आसान ये 16, ये 16 -1, ये 16 +1, ये 16 +2। इस लॉजिक से मैं तुरंत लिख सकता हूं विद इन 5 सेकेंड्स। आई नो ऑक्सीजन है 16, फिर उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, हो गया O2+, एक इलेक्ट्रॉन डाला, हो गया O2-, 2 इलेक्ट्रॉन डाले, O2 2-। दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू। ठीक है, सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डन? अरे वाह पीयूष, जल्दी से बताते हुए। पीयूष, व्हाट आर यू टेलिंग मी, इज दैट द बॉन्ड ऑर्डर? पीयूष, is that the stability का order? Okay, great. Can you also tell me magnetic properties, कौन सा पैरामैग्नेटिक, कौन सा MOT exactly, कौन सा पैरामैग्नेटिक, कौन सा डायमैग्नेटिक है? So how do we do this? कैसे करते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। पहले के 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बेरिलियम का दिखाया था, this is basically Be2. This is the same whether you have nitrogen or oxygen or anything else. By the way, less than 14 और greater than 14 का अलग ऑर्डर होता है। In this case, you have to choose the greater than 14 वाला concept. Greater than 14 वाले concept में this is what happens. If it is less than 14, then instead of this order, ये आ जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर। That's all. ठीक है? This sigma will go there. That's the only difference with less than 14. Let's fill this. Okay. ये इसमें कोई डाउट नहीं है, right? This is from NCERT डायरेक्ट चीजें। या मैंने बस लिख दिया यहाँ पे। You can also check this from NCERT. Let's count. Now 16 इलेक्ट्रॉन कैसे डालोगे? 8 यहाँ पे हो गए, 8 और मुझे फिल करने हैं। Yeah, I'm going to leave this as it is for 14. So how do I fill them? 16 हो गए plus 2, 2, 2, 6 and then 1 and 1 in each of them. Okay, because ये दोनों है same energy के, equal मतलब same energy. If they are of same energy, मतलब ये है degenerate orbitals. If they are degenerate, there's an idea कि सबको आधा फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग और फिल कर सकते हैं।
Hund's rule of maximum multiplicity बोलते हैं ना, यही चीज है, यही चीज है। पहले पूरा अगर नाम ना सुना आपने सिर्फ सुना होगा मे बी Hund's rule, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब कि जितना हम लोग आधा भर सकते हैं अच्छी बात है, उसकी एक्सचेंज एनर्जी हो जाएगी ज्यादा अगर हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड होगा। दिस ईयर दे टीच यू इन बीएससी एमएससी एंड ऑल, यू डोंट हैव टू नो अबाउट इट, बट एक्स्ट्रा थिंग्स जस्ट फॉर फन। ओके ग्रेट। पीयूष बता रहे ऑर्डर स्टेबिलिटी O2 एंड O2 माइनस, O2 एंड O2 माइनस, O2 प्लस पैरामैग्नेटिक। अच्छा ठीक है, ये बोल रहे हैं ये है डाया, ये सब है पैरा। ठीक है देखते हैं। हाँ ये तो पैरामैग्नेटिक क्लियरली दिख रहा है, बिकॉज ये मैंने बताया ना डीजेनरेट है, अलग अलग होंगे, सब समझ गए। अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, इसका कॉन्सिक्वेंस है पैरामैग्नेटिक हो गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 मतलब 4 बाई 2, ये तो मालूम है, 2 बॉन्ड ऑर्डर हो गया ऑक्सीजन का। उसी से हम लोग 15 का निकाल सकते हैं। 15 में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बढ़ गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा बिकॉज एंटी बॉन्डिंग से निकला। सी 15 वाला इलेक्ट्रॉन जो है, 15 वाला इलेक्ट्रॉन में you removed electron from anti-bonding orbital, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। देखो 6 माइनस 2 में 6 माइनस 1 बाई 2 हो गया, सो दिस 2.5, दिस इज ऑल्सो पैरा, बिल्कुल सही बोला, ये दोनों हो गए पैरा। व्हाट अबाउट O2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हियर, बट नाउ आई हैव एडेड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द एंटी-बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सो बॉन्ड ऑर्डर मस्ट डिक्रीज बाय हाउ मच, बाय द सेम अमाउंट, हाफ, सो 6 माइनस 3 बाई 2 1.5 हो गया। ओके and these are all para as correctly pointed out. Last वाला O22 minus सब भर गए इधर। Now ये तो हो गया diamagnetic because now I don't have any unpaired electrons anymore, no more unpaired electrons। ठीक है cool, bond order is simply 6 minus 4 by 2 which is 1। बिल्कुल सही बोला पीयूष ने कि this is the order of stability, okay, and this is the magnetic property, para 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 diamagnetic। बढ़िया बढ़िया, जल्दी से कर लिया आपने, बहुत डिटेल वाला सवाल, यू गेट इट वेरी क्विकली, लवली, ग्रेट ग्रेट, गुड टू हैव यू हियर पीयूष, सुपर, तीर्थराज, ग्रेट आंसर्स, परियाल ऑसम ऑसम, राधिका ब्रिलियंट ब्रिलियंट, राधिका बहुत समय से शांत थी आप, ओके गुड टू हैव यू एक्टिव हियर अगेन। ओके लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस फॉर द डे, सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्लस और माइनस साइन शोन इन रिप्रेजेंटिंग ऑर्बिटल्स, ये तो बहुत सही सवाल है, थैंक यू भाग्य, थैंक यू। सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्लस और माइनस साइन, ये कैसे किया जाए, shown in representing orbitals, मतलब कि जब देखो होता है ना, you have this and this, yeah, this give you a big blob, if you have this and this you get some weird thing like this, I am not drawing it properly but NCERT draws it much nicer, something like that, right? अरे यार let's try our best, plus minus etc जो भी है। So what is that? That has to do with constructive and destructive interference. Okay, this psi, which is basically it doesn't have any physical significance. It's a mathematical idea, yeah, as a function of r, जो होता है, which leads to us finding out the probability of finding electron. Right? Psi square is the probability density. Quantum mechanics की बात कर रहे हैं हम लोग, right? Probability density. उसका जो एक स्टेप पीछे है, मतलब psi, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है then it's plus, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है then plus minus, ठीक है, that's all it is, added and subtracted, absolutely फरियाल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। out of phase and in phase, Swatit, I love that, out of phase and in phase, exactly, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही टेक्निकल टर्म्स यूज किए, सही है। If you want to know more, you can check out the NCERT. These are all questions from NCERT. Last question for today, and I love that we are absolutely in time. Describe the hybridization in case of PCl5. Why are the axial bonds longer as compared to equatorial bonds? क्यों? Why? Why can't you? Sir, wave function. Exactly, super duper. ये वाला सवाल हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? वो बॉन्डिंग कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं। फॉर अ सेकंड, एक मिनट, हम तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे थे क्या? नहीं, बॉन्डिंग। This is straightforward, right? Phosphorus. I was going to say potassium. Phosphorus. 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 ये extra आ गया. This should not be here. Yeah. It is because you have 3 and 4 and 5. Oh, and it is good. This is the, what do you call it? Base or unexcited phosphorus atoms. Excite होने के बाद ये भाई साहब चले जाते हैं उधर D में। अगर वो D तक चले गए हिम्मत करके, then chlorine भाई साहब अरे कि चलो let's do this bro, let's go, let's go, let's go, or then the army of 5 chlorine atoms that comes and attaches itself to this,
what you get is a beautiful sp3d configuration, which is a trigonal bipyramidal. Yeah, दो pyramids ऊपर और नीचे से trigonal bipyramidal. And why is this shorter? Why is this longer? ये distance कम है क्योंकि equatorial plane है, they're all chill. But between them there's a lot of repulsion, इसलिए 120 degrees. And that repulsion pushes these guys out. Like भाई ठीक है, cool, चलो push away. इसलिए ये distance is longer. ठीक है, just because repulsion. sp3d sir, बिल्कुल सही बोला आपने. sp3d due to repulsion. Simple. Yes, will donate one electron. और कौन सा will be p? It will be, the bonding is going to be sp3d plus p. Okay, क्लोरीन की बॉन्डिंग किससे होगी? नीट में ये भी सवाल पूछ सकते हैं. sp3d हो गया फॉस्फोरस का, क्लोरीन का कौन सा होगा? It will not be s, it will be p. है ना? सोचो थोड़ा. Right? Yes, absolutely. ठीक है, चलो. With that we are done with आज का सेशन on chemical bonding. You're all wonderful. हम लोग नीट के सेशंस बिल्कुल तेजी से कर रहे हैं. ऑलरेडी हम लोग पहुंच गए चौथे चैप्टर में. 4 चैप्टर्स खत्म हो गए, 5वां चैप्टर करेंगे हम लोग ट्यूसडे को. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज खुद भी थोड़ा सॉल्व करो. आई एम डूइंग अराउंड हाफ द क्वेश्चंस आई फील. या, एंड इफ यू वांट टू सी द थ्योरी सेशंस, प्लीज थर्मो के थ्योरी थोड़ा पढ़ के आना और एनसीईआरटी कर देना. इट्स वी हैव डन वंडरफुल थ्योरी सेशन ऑन थर्मो. चेक करना. विल मीट अगेन ऑन ट्यूसडे. ठीक है. Thank you so much everybody for your time. Have a wonderful weekend. An amazing Saturday afternoon. It's wonderful in Bangalore. I'm sure आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे मौसम अच्छा है. एंड सबसे अजीब चीज मैंने देखी आज कि दिल्ली का टेम्परेचर 25 डिग्री था और बैंगलोर का 30 डिग्री है. घोर कलयुग यार. एनीवे, हैव अ गुड वीकेंड एंड एंजॉय द इवनिंग. घूम के आओ, टहल के आओ. I'll see you again on Tuesday. ठीक है. बाय. टेक केयर. सी यू.